Yes, so we will start today. Let me show you about this dinoflagellate. See, are you able to see this image? This image is of what? Dinoflagellates. Yes, ma'am. पर सर्च किए थे. Okay. तो तुमने देखा? Yes, ma'am. ये due to the presence of these dinoflagellates in the ocean or sea water, they appear to be like this. Okay. First thing ये था. Now next today we will study about decomposer protists and then about the protozoans. Okay. And at last, please make myself remember that I have to told you about this nostoc and heterocyst. Okay. So consumer decomposer protist. Consumer decomposer protist. Now, अब जितने दो protist के types बचे ना, these are not so much difficult to learn. Only few points are there which you have to remember and nothing else. Protist. Or we simply can call them as slime molds. Now, earlier मैंने बताया ये slime molds क्यों कहलाते हैं? Because they have fruiting bodies. और fruiting body किसका characteristic है? Fungi. Yes. तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? Protistan. All together. Okay. Protistan fungi. Main ये चीज है because in their molds they are forming fruiting bodies and fruiting bodies are characteristic of fungi. इसलिए that is why they are also called as Protistan fungi. Now another main point is that they are achlorophyllous. Achlorophyllous. Achlorophyllous means what? Chlorophyll is absent in them. Chlorophyll absent. जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था दैट वी हैड प्लेस्ड देम इन व्हाट ऑटोट्रॉपिक पार्ट 1 एंड नाउ जितने भी जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है दे विल बी इन कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन्स. ओके, सो इसमें क्लोरोफिल नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज achlorophyllous. मूव, हाउ दे मूव और व्हाट इज देयर मूवमेंट? दे मूव ओवर डेड एंड decaying twigs of plants. ओके, सो उनकी फीडिंग भी इसी तरह से होती है एंड प्रोसेस देयर फीडिंग आल्सो. ओके, सो जब भी वो लोग अपना फीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो लोग किस पे करते हैं? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट? सैप्रोफिटिक. सो दे हैव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. और ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? बाय मूविंग ऑन टू द डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स के ऊपर ये मूव करते हैं और उसी मूवमेंट को क्या करता है? उस ट्विग का जो न्यूट्रिशन है उस पत्ते का या उसके स्टेम के पार्ट का उसके ऊपर फीड करते हैं, यानी कि उसको पूरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं. लाइक सी हियर, ये जो लीव्स है, सी दिस इज द पार्ट ऑफ लीफ एंड ये जो येलो पार्ट देख रही हो ना, ये लीफ का पार्ट है एंड ये इसके अंदर जो ये येलो पार्ट है ये सारे क्या है? दीज आर ऑल प्रोटिस्ट और वी कैन से स्लाइम मॉल्ड्स. और ये किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? ये एक क्या हुआ? पेड़ से जो गिरा हुआ पत्ता होता है वो है. तो इसका फीडिंग कैसा हुआ? इनका फीडिंग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हुआ क्योंकि ये लोग डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट के पार्ट्स है उस पे अपना फीडिंग कर रहे हैं. एंड फीडिंग भी कैसे कर रहे हैं? दे मूव ओवर द प्लांट और ट्विग. इनका मूवमेंट है एक तरह से मूवमेंट, ये मूव करके फीड कर रहे हैं और उसी प्लांट पे या उसी पार्ट पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? How having their nutrition? They are having saprophytic mode of nutrition. And कैसे move कर रहे हैं? They are feeding dead and decaying parts of plant. चाहे वो plant का leaf हो, चाहे वो stem part हो, उसके ऊपर वो लोग move कर रहे हैं और उसी तरह feed कर रहे हैं और साथ ही साथ वो plant को क्या कर रहे हैं? पूरी तरह degrade कर रहे हैं. Okay? Now their aggregation in favorable condition. In favorable condition, they show aggregation. Aggregation जब ये show करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? Plasmodium बनाते हैं. फॉर्म प्लाज्मोडियम. एंड ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? फिर ये प्लाज्मोडियम जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है, मींस ये वेजिटेटिव स्टेज कह लो. दिस वन इज व्हाट? वेजिटेटिव स्टेज और वी कैन से यंग स्टेज. ओके, यंग स्टेज. एंड इसी यंग स्टेज में क्या है? सेल वॉल नहीं है. सो सेल वॉल इज व्हाट? एब्सेंट. सेल वॉल एब्सेंट. एंड जब सेल वॉल एब्सेंट है एंड इन लोग के पास क्या है? न्यूरल प्रोटोप्लाज्म. ओके, न्यूरल प्रोटोप्लाज्म. न्यूरल नॉट नेकेड. दे हैव नेकेड क्यों है? क्योंकि इन लोग के पास सेल वॉल ही नहीं है. नेकेड प्रोटोप्लाज्म. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिजेंबलिंग टू व्हाट? ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिजेंबलिंग टू व्हाट? रिजेंबलिंग टू किंगडम एनिमेलिया. सी प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के वेजिटेटिव स्टेज में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है. जब सेल वॉल एब्सेंट है तो प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनके सेल की. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसमें होते हैं? एनिमल किंगडम्स के सेल में. कि उनके पास पहला लेयर किसका होता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल वॉल उसमें भी एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट है. नाउ अब अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन दे शो डिफरेंशिएशन. एंड जब ये डिफरेंशिएशन शो करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म
fruiting bodies. Okay, and ये जब fruiting bodies बनाएंगे तो in that case they will be called as what? Reproductive stage. Okay, or we can say sporophytic stage, reproductive stage और स्पोरोफिटिक स्टेज या स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्टेज ओके एंड जब ये लोग इस स्टेज में आएंगे इन दिस स्टेज दे विल हैव व्हाट सेल वॉल अराउंड देमसेल्फ सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा इन इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में दे विल हैव सेल वॉल अराउंड देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी बिकॉज व्हाई क्योंकि कंडीशन उन लोग के हिसाब से नहीं है दे आर हैविंग अनफेवरेबल कंडीशंस सो इन अनफेवरेबल कंडीशन दे डेवलप अ सेल वॉल और वी कैन से अ काइंड ऑफ सिस्ट ये कब आती है जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है ठीक है एंड जब सेल वॉल का प्रेजेंस आता है देन दे विल प्रोड्यूस व्हाट स्पोर एंड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं प्लांट्स के रिजेंबलिंग टू किंगडम प्लांटी एंड देखो सिमिलरली यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज का भी फॉर्मेशन हो रहा है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज कहाँ बनते हैं किंगडम फंजाई में तो एक ही प्रोटिस्टा में वी कैन सी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर किंगडम इसीलिए इस किंगडम की बाउंड्री क्या है नहीं डिफाइन की गई है बिकॉज दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम ऑल्सो किंगडम फंजाई ऑल्सो एंड किंगडम एनिमेलिया ऑल्सो इसी एक ऑर्गेनिजम्स को ले लो तो अगर इसके वेजिटेटिव स्टेज में देखो तो ये रिजेंबल करेगा एनिमल को अगर इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज को देखेंगे तो ये लोग क्या करेंगे प्लांट किंगडम और फंजाई किंगडम को रिजेंबल करेंगे सो ओवरऑल कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जो है इट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द थ्री किंगडम दैट इज व्हाई ओनली दे आर कॉल्ड एज व्हाट एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक किंगडम्स ओके नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस ओके now coming to the characteristics yes slime molds they are saprophytic mode of nutrition why because वो लोग क्या कर रहे हैं dead and decaying organisms के ऊपर feed कर रहे हैं and Anton de Berry related them as mycetozoa is what it is fungi mycelium से relate किया है fungi से relate क्यों किया because they have fruiting bodies and fruiting bodies क्या बनाती हैं mycelium बनाती हैं later we will study in kingdom fungi so that is why he named them as what mycetozoa they are also named as fungus animals protozoan fungus we have studied the protist and fungus they are called as because they share what common characteristic of both animals and fungi and due to the fungi protist and nature so they are called as together what protist and fungi because having characteristic of both fungi also and protista also and animalia also तो इसलिए इसको protist and fungi बोल रहे हैं जनरल फीचर्स क्या क्या हैं they are found in what moist terrestrial places जहाँ पे rich कहाँ है decaying organic food है moist terrestrial places like कि जहाँ पेड़ का शेड वगैरह होगा mostly they will be found over those areas या फिर जहाँ नई नई बारिश हुई है and those areas underground areas or we can say the earth area which is moist and having lots of decaying matter over that places they will grow okay and फिर the body of slime mold is covered with what mucilage having gelatinous consistency अब इस figure में देखो this figure here we can see the upper part covering of their body here little bit covering is what they are forming this covering is what mucilage in a sheet this covering is mucilage in a sheet एंड ये प्रोटेक्ट करती है एक तरह से कह लो इनकी बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए ये म्यूचुअली सीट बना है नेक्स्ट क्या है द वेजिटेटिव पार्ट लैक सेल वॉल सी एक्सप्लेन दे डोंट हैव सेल वॉल दैट इज व्हाई they resemble the animal cell they are surrounded by plasma membrane however the spores have cellulosic cell wall spores कब बनते हैं reproductive stage में so ये reproductive stage में spores आते हैं and that reproductive stage will resemble to plants locomotion in slime molds mainly occur with the help of pseudopodia Pseudopodia is what false feet we call it as false feet because इसमें कोई असली feet नहीं होता see they are having the body features like this they have their body like this and with movement of their body they are okay so let me explain if they are having body like this so जब भी इन्हें move करना होता है if they are in need of their locomotion they do what they just extend their cell wall or plasmodium or plasma membrane towards one side and then they move to that side और अगेन मूवमेंट के बाद क्या होता है इनका प्लाज्मोडियम वैसा वापस आ जाता है सो एक्चुअली उनके पास कोई फीट नहीं है जस्ट दे आर हैविंग अ सीडोपोडिया एज अ कवरिंग तो उस सीडोपोडिया को ये लोग क्या करते हैं उस कवरिंग को ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है एंड उस जब ये अराइज होता है तो इसको कहते हैं सीडोपोडिया ओके नेक्स्ट क्या है दे शो फैगोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अब यही जो सीडोपोडिया है ना
जब न्यूट्रिशन इन्हें करना होता है तो ये क्या करते हैं, इसी सीडोपोडिया को समटाइम्स दे एक्सटेंड दिस सीडोपोडिया एंड मेक दिस सीडोपोडिया रप्चर, और जब यहाँ बीच से रप्चरिंग हो जाती है तो इसी रप्चरिंग के थ्रू दे टेक देयर न्यूट्रिशन इन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज they do not have chlorophyll explained. Both sexual and asexual mode of reproduction occur. Asexual में binary fission and sexual में isogamy, oogamy and the third one is anisogamy. We can see all pattern of reproduction here. Okay, they are like protozoa in their amoeboid plasmodial stage. See, starting stage में ये क्या है, protozoa से resemblance कर रहे हैं, and similar so to fungi in spore formation. जब spore formation कर रहे हैं तो इसका resemblance किससे है, fungi से. The cellular slime modes occur in human containing upper layer of damp soil. When a food supply is short or conditions are unfavorable, they form aggregate without any fusion. The aggregate mass is called cytoplasm. Okay, so unfavorable condition is what I told कि वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से अपने आप को एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, एंड इस ग्रुपिंग में क्या होता है, उसी ग्रुपिंग के साथ वो लोग फीडिंग फूड जितना भी चीज है उस ग्रुप के अंदर करेंगे और इस ग्रुप से बाहर नहीं जाते हैं. Acellular slime molds, plasmodial slime mold are commonly found in dead and sea. इनका हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ है, वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट पे या प्लांट मैटर पे ही पाए जाएंगे, एंड दे आर बेनिफिशियल कॉज दे आर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. क्योंकि वो लोग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं तो वो लोग क्या है, बेनिफिशियल है. वाई, इन्वायरमेंट क्लीनिंग, इन्वायरमेंट क्लीनिंग, क्योंकि जिस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक के ऊपर फीड करेंगे, फीडिंग करते करते उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, सॉइल में डिसॉल्व कर लेंगे, एंड सॉइल में डिसॉल्व होकर उसकी जितनी कॉम्पोजिशन या जितनी क्वांटिटी रहेगी जिसके अंदर उसका मिनरल न्यूट्रिएंट रहेगा वो सब क्या होगा, अर्थ में या सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल. Understood about this consumer decomposition protist or slime molds? Yes, ma'am. Okay, Furwan, do you have any problem in any of it? No, ma'am. Okay, so we will move to next point, which is protozoan protist. So here I will explain this one in a table form, and then we will come to the slide. So protozoan protist. First important point ये है कि ये लोग क्या हैं, primitive and relative हैं किसके, animal kingdom के. इन्हीं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट से एनिमल किंगडम अराइज हुआ है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल किंगडम और एनिमल्स. वी कैन से एंसेस्टर्स आल्सो, टू एंसेस्टर्स. बेसिकली यही मेन जो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट है, इन्हीं से मेन कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबलिंग है एनिमल किंगडम का, और इन्हीं से क्या हुआ है, एनिमल किंगडम अराइज हुआ है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे आर व्हाट, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल किंगडम और एनिमल्स. ओके, सेकंड क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट है. जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं है तभी ये लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हुए. ओके, एंड दे आर हैविंग 4 टाइप्स. दे हैव व्हाट, 4 काइंड्स. 4 काइंड्स में डिवाइडेड है. वन इज व्हाट, amoeboid protist. Amoeboid protist. In some books, when you will study kingdom Animalia, na, you will study the structure of what amoeba. Amoeboid protist are included there also for their studies. क्यों? क्योंकि arise जो animal kingdom का हुआ है वो इसी amoeboid protist और या protozoan protist से ही start हुई है. Okay, then they will be flagellated protist. Those who have cilia, they will be ciliated protist, and some are sporozoans. यही 4 टाइप के जो क्या कहते हैं प्रोटोजोन्स हैं, and we will study all these 4 kind of protozoans in a table. Okay, features, then 1 protist, 2, 3. Okay, here we will write feature, then what was this, amoeboid protist. Okay, amoeboid protist, then flagellated protist, then ciliated protist, and last one is what, sporozoans. Okay, so first feature is habit and habitat. As usual, habit and habitat. So habit and habitat में ये कहाँ पाए जाएंगे, fresh water में and sea water में. Only few will be found. Few lives as what, parasite, lives as parasite, and mostly they are what, free living. Mostly free living means no parasitic form. Now flagellated protists, they are free living या parasitic. See, most of the organism of these protozoans ना, they are feeding as a parasite because they are what, predator. Heterotrophs में मैंने point लिखा है. Okay, so heterotrophic nutrition में mostly क्या है, predators हैं, predators और parasites. So 90% we can say कि 90% of protozoan क्या है, वो लोग parasite के form में exist करेंगे. Okay, fresh water again, and this few are marine forms. Few are marine forms. Okay, now here they will be completely endoparasite. All endoparasite. Parasite. Sporozoans are found only inside the body of organism causing different kind of diseases. They are very famous for their disease causing organisms. Okay, they have disease causing agents. Now next second point will be what we can say their locomotory structure. Okay, locomotory structure. How they move. So amoeba move by what?
sorry, amoeboid protist move by what? Pseudopodia, because they have false feet. Pseudopodia. इसके amoeboid protist में कौन आएगा? अमीबा. अमीबा के पास क्या होता है? Pseudopodia, false feet. See, this is the structure of amoeba ना. And इसी को move कराने के लिए क्या होता है? एक extend कर जाता है. That will be known as pseudopodia. Okay. So next is flagella. So for their movement they have flagella by their name only, and for their movement they are having what? Cilia. जब आप सेल चैप्टर पढ़ोगे तो देन आई एक्सप्लेन बेटर कि फ्लैजिला क्या है, सीलिया क्या है. ओके. एंड स्पोरोफाइट्स में नो फ्लैजिला, नो सीलिया, नो सूडोपोडिया, एवरीथिंग इज एब्सेंट. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट, एनी स्पेशल फीचर्स, if they are having any special features in them. So here, okay, first we will take the examples, then we will come to the special features. Or should I take the special feature first? Okay, the special features. Any special feature do you know about amoeba? Sana or Purvan, can you tell me about any special feature? Do you know Sana or Purvan? अमीबा में कोई एक स्पेशल फीचर्स जिसकी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है. ओके, इफ यू डोंट नो यू कैन से दैट आल्सो. ओके, सो लेट मी टेल यू स्पेशल फीचर्स अमीबा में क्या है. दे आर हैविंग सिलिका सेल. सिलिका शेल. सिलिका शेल क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, रफ होता है, एंड समटाइम्स दे आर इंडेस्ट्रक्टिबल आल्सो. दैट इज व्हाई वी कैन. ओके, सो आई वाज टेलिंग सिलिका शेल. सो जब सिलिका शेल स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो फॉर दिस रीजन ऑल्सो समटाइम्स अमीबा क्या है? इमॉर्टल. अमीबा क्या है? इमॉर्टल. क्यों? क्योंकि ये लोग अपने बॉडी को जस्ट डिवाइड कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई देमसेल्फ. उसके बाद डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? उनका बॉडी कभी डेथ नहीं होता, बस वो डिवाइड करते चले जाते हैं. तो किस वजह से? क्योंकि दे हैव अ प्रोटेक्टिव सिलिका शेल इन देम, एंड इस सिलिका शेल को क्या होता है? ये जल्दी किसी भी अमीबा के ऊपर अफेक्ट नहीं करता until and unless you kill them by laboratory methods. Okay, and here special features in what? Special features in flagellated protistants. तो flagellated protistants में rare sexual method देखे जाते हैं. Okay, rare sexual method, यानी कि इसमें जो होगा, इसका जो sexual reproduction method है वो क्या है? rare है. means कि they don't have normal sexual method. And later I'll explain this one also. Rare sexual method means कि इनका sexual behavior बहुत different होता है other comparison to other protistants. And one more thing, they show various associations. Association in the sense कि ये लोग parasitic भी मिलते हैं, ये लोग commensalism में भी दिखते हैं, commensal, and ये लोग symbionts की तरह भी रहते हैं. Now symbionts I have explained कि mutual relationship रहता है, one partner is benefiting the other partner. दोनों साइड क्या रहता है? benefited थ्योरी रहती है सिम्बायोन्ट्स में. पैरासिटिक में क्या है? दे विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और द होस्ट ऑर्गेनिज्म वेयर दे आर फीडिंग. नाउ व्हाट इज कमेंसालिज्म और कमेंसल्स? कमेंसालिज्म और कमेंसल इज व्हाट? इट इज अ रिलेशनशिप वेयर वन इज गेटिंग बेनिफिट एंड अदर इज नॉट. ओके, सी कमेंसालिज्म में क्या हो रहा है? एक का फायदा हो रहा है, एक का क्या हो रहा है? नुकसान. ओके, एक का फायदा हो रहा है और एक का कुछ नहीं. सो the second person is receiving nothing. ना उसका नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, but the first person is getting benefited. That kind of relationship is what? Commensalism. And symbiosis में क्या होता है? Both the partners are getting benefited from each other. So अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है, they can remember by this symbol. ये क्या है? बेनिफिट है. एंड जिसको बेनिफिट मिल रहा है पॉजिटिव, जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है नेगेटिव, एंड जिसको कोई चीज नहीं मिल रहा, ना बेनिफिट हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा है, या जो नुकसान हो रहा है वो जीरो लिख सकता है. ओके, so commensalism is a kind of relationship where one organism is getting benefited and other is not getting benefited, and neither getting benefit and nor it has any demerit. Okay, so एक का फायदा and दूसरे का ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है. So this kind of relationship is what? Commensalism. And symbiosis is what? Two mutual organisms are getting benefited by each other. Okay, so this flagellated protist show what? Various type of association. ये parasitic form में भी देखा जाता है, ये commensalism form में भी देखा जाता है, and ये symbiotic form में भी देखा जाता है. Next क्या है special features? किसमें? स्पोरोजोन्स में और ciliated. Okay, ciliated ones. So ciliated ones में क्या है? They have definite regions in them. They have definite regions. Regions for what? They have definite regions or place for ingestion and egestion. Means intake of food material के लिए उन लोग के पास proper एक system है, and egestion of food means taking out of the food material के लिए भी उन लोग के पास proper system है. So region for ingestion के लिए उन लोग के पास एक proper structure है, इसको bullet बोला जाता है, and egestion. Okay, so they have proper regions for what? Intake of food material के लिए भी proper region है, and
उस फूड मटेरियल को मींस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर ले जाने के लिए भी प्रॉपर रीजन है, दैट इज इजेशन। तो इंजेशन के लिए भी है एंड इजेशन के लिए भी है। एंड लास्ट वन, दे आर ऑल इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज प्रेजेंट इन देम। इनकी जो लाइफ साइकिल है, प्रेजेंट इन देम नॉट देयर लाइफ साइकिल, वी कैन से देयर लाइफ साइकिल, जितने भी स्पोरोजोन्स हैं दे आर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शियस। एंड इन्फेक्शंस कहाँ प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं उनके पूरे लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आएगा और उस इन्फेक्शियस स्टेज को वो लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में जाके इन्फेक्ट करते हैं। सो दीज आर स्पेशल फीचर्स ऑफ व्हाट स्पोरोजोन्स। नाउ एग्जांपल्स, ओके, फोर्थ वन वी विल टेक एग्जांपल्स साइड बाय साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजेस आल्सो, ओके, क्योंकि यही जो एग्जांपल्स है वही डिसीज भी कॉज करते हैं। सो एग्जांपल्स में इनका क्या है, अमीबा, ओके, एंड यही अमीबा क्या करता है, अमीबा या इंट अमीबा वी कैन से, अमीबा और इंट अमीबा क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में डाइसेंट्री कॉज करते हैं, ओके। एंड दिस वन इज व्हाट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, ट्रिपैनोसोमा जो इसका ऑर्गेनिज्म है या पॉजिटिव एजेंट है, ट्रिपैनोसोमा, ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। दिस वन इज मोस्ट फेमस एग्जांपल, स्लीपिंग सिकनेस। In higher classes, we will get to study about this whole structure of trypanosoma. So you have to, okay, again eraser card. So this, you have to remember this one. Many times it has been asked in the exam, trypanosoma and causative agent is sleeping sickness is caused by which agent? It is trypanosoma. So either this one asked or this one asked, you will remember, you have to remember both. ये sleeping sickness का जो disease है वो cause कौन करता है, trypanosoma. Trypanosoma is what? It is a kind of flagellated protist. Now the third one is what? Paramecium. Example is paramecium. And paramecium is found to cause nothing, so it is simply will be written like that. Next one, it will cause various kind of diseases, and most famous, it has a stage in which plasmodium, इसके लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम स्टेज आता है जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज माना जाता है, इन्फेक्शियस स्टेज माना जाता है। और ये स्टेज क्या कॉज करता है, मलेरिया इन ह्यूमन, ओके, मलेरिया इन ह्यूमंस। और इसको भी कॉज करने के क्या है, इट नीड्स टू होस्ट, एक तो क्या है ह्यूमन बॉडी रहता है, एक कोई और बॉडी मॉस्किटो का। सो जब भी ये जो स्पोरोजोन्स के स्पोर्स हैं, स्पोर्स कम वेयर मॉस्किटो में आते हैं, स्पोर्स मॉस्किटो की बॉडी में आते हैं, और जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करते हैं तो फिर ह्यूमन में कौन सा डिसीज होता है, मलेरिया, ओके। एंड इसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव या लाइफ साइकिल स्टेज है, वी विल स्टडी इन क्लास 12th एंड सम अदर चैप्टर ऑफ diseases, okay. So diseases chapter में जब class 12 में आएंगे तो ये पूरा plasmodium, how it cause and what are its life cycle, it will be explained later, okay. So for now you have to remember कि ये स्पोरोजोन्स जो हैं इनके अपने लाइफ स्टेज में प्लाज्मोडियम एक पॉजिटिव एजेंट है, ये मॉस्किटो और ह्यूमंस के बीच में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एंड इन्हीं दोनों के बीच में इट गोज इनटू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, एंड फ्रॉम देयर व्हेनेवर मॉस्किटो बाइट्स एनी ह्यूमन बीइंग, from its saliva the spores move into the blood of human being, and from there it feeds its nutrition and grow and cause malaria, okay. So do you have any doubt about all these four, amoeboid, flagellated, ciliated or sporozoan? Do you have any problem in understanding? Then we will come to the slide. No, ma'am. Okay, so now coming to the slide, protozoan protists, they are unicellular protists with animal like behavior. See, animal like behavior आगे पहले ही, क्यों, क्योंकि ये लोग ancestor हैं animal kingdoms के। They were first studied by Liu and Hu. This is not very much important, have never been asked. Protozoan protists may be aquatic, terrestrial or parasite. They can cause several diseases in human and animals. See, I've explained कि जो जितने भी protozoan protists हैं, ये लोग बहुत सारे disease causing organism हैं, और उसमें भी जो sporozoans हैं, they are mostly, okay, they are microscopic as always. Every protist is microscopic, तो ये point तो null ही है, समझ लो। Unicellular, colorless and organism with different shapes. ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। यूनिसेलुलर वाले क्या रहेंगे, माइक्रोस्कोपिक रहेंगे, कलरलेस हैं, डिफरेंट शेप है, तो बैक्टीरिया भी करता है, तो प्रोटोजोआ भी कर रहा है, ओके। लोकोमोशन इज इंपॉर्टेंट। लोकोमोशन इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फिंगर लाइक सीडोपोडिया, फ्लैजिला एंड हेयरी सीनिया। ऑल द प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि वो लोग प्रीडेटर्स की तरह है, पैरासाइट की तरह फीड करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Now respiration occurs to what, general surface of the body. Respiration means what, how they are breathing. So see, they are attaching their body to some surface, and by that attachment they are having their respiratory process done. Asexual reproduction occurs by what, binary fission, multiple fission, budding. Sexual reproduction occurs by Sangamian conjugation. See,
सिंगैमिन कॉन्जुगेशन ही किसमें है, हाइयर एनिमल्स का फीचर है, हाइयर एनिमल्स का। एंड ये हाइयर एनिमल्स जो मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट रेयर सेक्सुअल मेथड, तो इसमें सिंगैमी एंड वो पाया जाता है conjugation. Okay, so this four major protozoans, you can see the image, amoeboid like structure. This one is the famous, you have to remember the example and name of this one. Flagellated protist, you have to remember this name, Euglena. Okay, and trypanosoma is the one which is causing sleeping sickness. Now sporozoans, they will be found only in endoparasitic stage, you cannot see them out of their any body of organism. So अगर उनको ectoparasite means अगर उनको body को बाहर निकाला जाए, they will die. So whenever we will study about any sporozoa, we will take the sample of that organism where it is affecting. Now, ciliated means example, best example is what? Paramecium. Coming back to them, amoeboid protists, these are freshwater, seawater, moist soil, some are interamoeba, are parasite. Okay, I explained they are found where? Freshwater, seawater, few lives as parasite and mostly free living. Okay, so general features are, okay, examples are amoeba and amoeba. These two examples are very much enough for you to remember. Sometimes only polymixa can ask, but not very important one. Okay, general features is they move and capture and prey by pseudopodia false feet. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवमेंट और लोकोमोशन में कि हाउ द मूवमेंट और लोकोमोशन इन अमीबा इज डन. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ pseudopodia or false feet. Okay, the body is without periplast. It may be naked or have calcareous cell layer. See, calcareous cell layer is what? Silica shell. Okay, flagella are present in subdevelopmental stages. Flagella mostly absent होता है, but in some stages flagella can be present. Nutrition क्या है? Holozoic है. Asexual reproduction occurs by binary fission, multiple fission, spores and budding. Sexual reproduction by syngamy. Okay, so they are having every kind of asexual and sexual relationship. Okay, now flagellated protists or protozoans, the member of this group are free living or parasite. Example include what? Giardia and trypanosoma, leishmania. See, every organism name you have to remember because one or the other time ये चारों पांचों जो नाम है ना, these are causative agents of one or the other diseases. तो तुम्हें ये सारे नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे. Okay, Giardia cause elephantiasis or it is one of the host of elephantiasis. So Giardia ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. Trypanosoma is what? Sleeping sickness. Leishmania donomani is also causing some kind of sickness. That CC fly is one of the host of this Leishmania donomani. So you will study in class 12 diseases chapter. Then Trichonympha and Trichomonas, these are also disease causing organisms. Okay, disease causing organisms. So जितने भी नेम हैं इन फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि ये नेम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के किसी न किसी चैप्टर में जरूर आएगा और दिया जाता है. जनरल फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप आर व्हाट? दे हैव फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन, क्योंकि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स नेम ही है. दे आर एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, कमेंसल्स और सिम्बायोटिक. सी, कमेंसल मींस एक का पॉजिटिव यानी कि एक का फायदा एंड दूसरे का नुकसान हो रहा है और ना फायदा हो रहा है. सिम्बायोटिक में दोनों का फायदा हो रहा है. पैरासिटिक में क्या है? दे आर कंप्लीटली फीडिंग ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे का क्या हो रहा है? नुकसान है, इसका क्या हो रहा है? फायदा. They are generally what? Uninucleated, occasionally multi. इनके बॉडी के अंदर मोस्टली क्या रहता है? एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन कभी कभी हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. The body is enclosed by what? Firm pellicle. Nutrition is holozoic, saprophitic and parasitic. See, nutrition क्या है? Surface attachment से भी अपना न्यूट्रिशन करते हैं. Saprophitic means बॉडी डेड बॉडी के बाद भी जाके ले सकते हैं. पैरासिटिक तो होते ही हैं. Asexual reproduction, binary fission and cyst formation. So ये क्या है? यूनिक है. सिस्ट फॉर्मेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन सम फॉर्म ओनली, और जो कि क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स रहता है. एंड कॉम्प्लेक्स मोस्टली क्या फॉर्म, किस फॉर्मेशन में? सिंगैमी का प्रोसेस. सिंगैमी भी कंप्लीटली नहीं रहता. दे हैव सम अदर काइंड जो कि डिफरेंट रहता है लिटिल बिट फ्रॉम सिंगैमी, बट मोस्टली क्या है? सिंगैमी के प्रोसेस को ही ऑक्यूपाई करता है. एंड वो भी किसमें? बहुत रेयर ऑर्गेनिज्म. ओके, रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वेरियस स्पीशीज ऑफ दिस प्रोटोजोअन्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन. So trypanosoma, sleeping sickness, leishmania, kala azar or dum-dum fever. See, Giardia, giardiasis, that is elephantiasis also, Trichomonas, leucorrhea. So ये चारों जो पॉजिटिव एजेंट और डिसीज है ना, ये चार के चारों कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉमन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Okay, so you have to remember all the four names. Then ciliated protozoans. Ciliated protozoans are what? They are aquatic, actively marine, actively moving organism because of presence of thousands of cilia. Cilia क्या होते हैं? फ्लैजिला ये बड़े बड़े होते हैं. एंड cilia क्या होती है? बॉडी पूरी छोटी 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में थ्रू आउट प्रेजेंट रहती है. एंड फ्लैजिला क्या है? ये एक बॉडी से निकल के सिर्फ एक ही जगह या दो जगह होती है. ओके, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो. सी, cilia, these are what? Hair like structure, these are cilia.
And flagella is what only one or two locomotive structures. See, trypanosoma में भी यहाँ पे होगा, and here also one or few flagella is present. ये लंबा होता है, means flagella are larger than the cilia. Cilia are small hair-like structures. Okay. Next, where was I? Paramecia. You have to remember only paramecium and sometimes vorticella. Not more than that. General features of these groups are many ciliate were free living, freshwater, marine. Paramecium is what it is, marine water. Large number of cilia present on the whole body surface. I've explained. Cilia are used for what? Capture food and for locomotion. Ciliated protozoans have cavity that opens to the outside of the cell surface. See, इन लोग के पास प्रॉपर क्या होता है, इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए कैविटी होती है जिसका नाम क्या है, बुलेट. मींस बुलेट से क्या होता है, फूड इंजेस्ट होता है एंड देन आफ्टर अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकिंग आउट बाय द हेल्प ऑफ दैट स्पेसिफिक रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज बुलेट. द बॉडी इज कवर्ड विद व्हाट? फ्लेक्सिबल पेलिकल. Ciliates have what? Macronucleus and smaller micronucleus. They have two kind of nucleus in them. See, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है एंड इनमें क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस रहेगा, एक छोटा न्यूक्लियस रहेगा. तो दे आर हैविंग टू न्यूक्लियस इन देम. They have small ejectable trichocysts for defense. अपनी बचाव के लिए ये लोग कुछ एक ट्राइकोसिस्ट हैं, we can say bullet like structure है ट्राइकोसिस्ट, जो कि अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं whenever they feel that there is some danger around themselves. Okay. Osmoregulation contractile vacuole होते हैं जो इन लोग के बॉडी का टेम्परेचर और रेगुलेशन मेंटेन करते हैं. Asexual reproduction occurs by what? Transverse spine diffusion या budding के. Cyst formation भी अगर होता है कब? जब unfavorable condition आता है. And sexual reproduction by means of conjugation. Now the last one is what? Protozoan Protists. These group include what? They have infectious spore-like stage in their life cycle. यही लाइफ साइकिल का स्टेज हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज करता है. इंक्लूड एग्जांपल में प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट. दिस वन यू हैव टू रिमेंबर क्योंकि इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इन डिटेल. देन मोनोसिस्टिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन, नॉट दिस वन. ओके. जनरल फीचर्स, दे आर इंडोपैरासाइट एंड पैथोजेनिक. सी, एवरी आर इंडोपैरासाइट एंड डिसीज कॉजिंग. Then locomotory organs and conductile vacuole absent होते हैं, ये लोग मूव नहीं कर पाते हैं. They move what? Through the blood, in blood stream in any organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करते हैं. न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक एब्जॉर्बिक. जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड के अंदर जाएंगे तो जितने भी ब्लड की कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, उसी को अब्जॉर्ब करके फीड करते हैं. बॉडी इज कवर्ड विद व्हाट? इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल. एंड कंडक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है. Asexual reproduction, multiple fissions होता है. Sexual reproduction through syngamy. Life cycle may include two different hosts, that is female Anopheles mosquito and human bee. See, I have written down mosquito, but not every mosquito. Only female Anopheles mosquito, because ये mosquito क्या है? Bite करती है. This mosquito have what? This mosquito bites mostly, क्योंकि ये sanguivorous होती है. Sanguivorous means जो blood पे feed करते हैं, blood feeding. फीमेल एनोफिलीज क्या होती है? सैंगिवोरस होती है, इसीलिए ये लोग क्या करती है? मोस्टली बाइट करती है ह्यूमंस पे एंड ब्लड को फीड करती है. ओके. सो दिस प्रोटिस्टेंट्स और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट इज कंप्लीटेड. डू यू हैव एनी डाउट इन देम? आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन प्रोटोजोन प्रोटिस्ट और द स्लाइम मोल्ड्स वन? ओके. सना एंड कुर्बान, आर यू हैविंग एनी डाउट? ओके. No, ma'am. Sana, I want to explain you some nostalgia. See, I've explained this one, na? Vegetative cell. This one is heterosis, nitrogen fixation. So ये फिगर किसका है? This figure is of nostoc. And ये nostoc क्या करता है? Nostoc क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में earlier I've given yesterday's assignment question. Discussion is going on, Purvan. So here I will explain once again. This part, the upper part, which is not having this heterosis, उसको बोलते हैं vegetative part. Okay? ये पार्ट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है. वेजिटेटिव पार्ट में क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है. और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज होता है. तो इसमें क्या है? PS1 भी प्रेजेंट है एंड PS2 भी प्रेजेंट है. एंड जिस पार्ट में ये हो रहा है, इस अपार्ट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, दे आल्सो हैव व्हाट? हेटेरोसिस पार्ट, और वी कैन से रिप्रोडक्टिव पार्ट. नॉट रिप्रोडक्टिव, वी कैन जस्ट से हेटेरोसिस पार्ट. और extra thick cell covering, extra covering is present. The tough cell covering is present in the heterosis, which protect. The heterosis करता है क्या है? Protect करता है the inside cells या inside materials of cell. Okay? And also ये जो है इसके अंदर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो they have what? Have enzyme. Enzyme कैसा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम. अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है? ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के. कैसा सेंसिटिव होता है? किससे? ऑक्सीजन से. टू द प्रेजेंस
ऑफ ऑक्सीजन. सो जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो दे मेक श्योर कि इस टाइम ये हेट्रोसिस्ट मेक श्योर करता है, मेक श्योर क्या, एब्सेंस ऑफ O2. यहाँ इस हेट्रोसिस्ट पार्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है एंड दे ओनली परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड इस पार्ट में दे यूज ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे कन्वर्ट ग्लूकोज, दे कन्वर्ट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. एंड इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होता है. नाउ इन दिस वन फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट एंड ओनली PS1 इज प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि PS2 में क्या नेसेसरी होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नेसेसरी होता है. इसीलिए हेट्रोसिस्ट वाले पार्ट में PS2 नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो सेंसिटिव है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. एंड दैट इज व्हाई जब भी वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा. नाउ हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस वन, दैट नॉनस्टॉप क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड कैसे करता है. यस ना? Yes, ma'am. Okay. So in today's lecture, is there any doubt for these dinoflagellates and slime molds and protozoan protists? If you are having any doubt, you can ask. Urban, do you have any doubt? No. Okay, then I'll end the class here only. See you next week. Okay.